Hey y'all, peace and blessings. We're gonna do a nice early morning stream and then I'm gonna do my work. So let's go into our favorite movie of all time. ذلك الكتاب لا ريب فيه Rock and roll music. All the shaitan are here. Drinking alcohol. सिर्फ आलम इस्लाम नू मिटाने इकट्ठे हुए ने We're here to destroy Islam. एक होते इस्लाम नू आग लान ले एक धमाका होएगा Interested in doing destroy Islam. ते जिदे फेक नाल चल तुझे ये कर सब तो मजबूत किला पाकिस्तान को किया जाता है और तुसी जिक्र नहीं किया आलम इस्लाम दे सब तो मजबूत किले नू डाल ले सब तुम और कैसे Thanks, Chief Batu. जी सर मैं मंसूर बोल रहा हूँ मैंने कंपास पाकिस्तान का बजट नहीं होता कंध इकट्ठा हो लैंड दे मैंने याद किया सर जिन्हों ये खबर नहीं हर गुंडे दे नक विच दम कीता है लेकिन सर तो बड़े गुंडे इसलिए कि गणपत के खिलाफ इंसान है ते भी जा पहुंचे हाँ कोई नहीं कर सकता तू ठीक कहना है उन्हें कहो ये गुंडे मैनू 24 तुसी मेरे दे बेताज बदमाश And all the मैं मुल्क दा जावेद ते गुलाम Badmash are here again. जिन्हां सारे बदमाशां ने लुटिया है जे मेरे बुए कोलों लंघ जान ते मर जान जे किसी दिन बदबख्ती उन्होंने अपने अड्डे ने इंतजाज कर बुलाया दीवाने मेरे लाल जगत रमने दीवाने मस्त मेरे लगदा मस्त हाथ लाऊं तुझे नजारा परवाने तेरी कहने गल बात में रहने दे सिर्फ इशारा मेरी अखदा सिर्फ इशारा नजारा शिवानिया परवाने दीवाने मेरे लाल जगत रमना लारा लपा अड्डी टप्पा लारा लपा More and more films. See all of this. जितिया होरा बिच तेला ये यारा तक होना है मजा परवाने लाल जगत और रस्ते अंदर बरखुरदार नच रही है जिस बत्ती च जिंदगी है इन पति जानदा है तैनू It's a lot of filler to throw a case like that. We're all a bunch of this is a bunch of marbles today. And here's Abhishek. He's approached. Abhishek, played by जिंदगी दा रास्ता भी
Javed तू ही played by बखाएगा। of course. And Bill Gates, the university. That's why more not to गली में गाई नाम he studies like perfect. बोल के पूरा Studio in about 10 minutes of shooting one thing and then fast. थैंक यू मिस्टर गुप्ता। वो मैनू एस सब लुकेरा पालो। ओए कितने जाएंगी? नाली पड़ी जाएंगी। मैं भी कर सकता। वो जानता है। ओ यार, ये मर्द से की पुत्र। हटो। पर एकम तो ते मैनू लेन आया। बंद हो चुकी है। हाँ। हुण से पिछला दरवाजा भी बंद हो दस्से की पुत्र। हुण से औरत और हुण से पिछला दरवाजा भी बंद हो The woman who was dancing. मैं ते थे हटो आया था। ते मैनू लेन आया था। ते मैं तुहानू दोवां नू लेण आया। मैं ते समझिया सी कि तुसी शर्म दे मारे डुब के मर गए हो। पर एकम बंद कर दे। तुहाडे च बेगैरत नहीं। तशरीफ ले आए ने तुहाडे लाडले। हुण इन्हां तो सदके वारी ताकि इन्हां दा हौसला के भरा डिप्टी दी वर्दी पाके डाके मरना दा। तुसी ते इंज झाड़ा पा रहे हो जिवें रोज डाके मारते ने। तेरी ऐसे हिमायत ने इन्हां नू हाय मैं मर गई। तेरे शर्म आंदी है इन्हां नू अपनी जुबान नो ताला लाओ डिप्टी साहब। आदि शानी गुस्ताखी लगन वाली है अदालत दा साडे कोल एहतराम नहीं होंदा। इस बेइज्जत तू हो क्यों? Yeah, very cheap. जे तेरी तरबियत खराब होंदी ए बच्चे हर साल सोने दे तमगे कदी ना लेंदे। कई सालों तो डिग्रियां हाथ च Yeah, then लेके they're complaining सस्ती that रोटी लई they worked really hard and they have, नौकरियां लभदे फिरदे। they're now forced पर to नौकरियां सिर्फ उन्हां कोल ने जिन्हां कोल कोई सनद It seemed like that. सिर्फ सिफारिशां ने। अशीदा कारोबार तू चट के खान वाले Here. कदी आप भी देखण दा कहंदे ये सिर्फ पुलिस दे प्यो ने साडे कोई नहीं लड़दे। चलो चाचा जी। चलो चली ज्यादा प्यारी चलो, चलो। ये नाल खोलो बदमाशी नहीं छोड़ा सकते। बदमाशी नहीं करेंगे। Feeling this form क्यों है? a lot of sense. आहो। Now we've gotten into साहब की गैरत तो Solomon चैलेंज कर was दिया गया। and now has sufficed. मेरे here's मौला जिन्ने साडे मोहम्मद दी शान च गुस्ताखी makes a कीती prayer है like this. ते तेरे कलामे पाक दी आयात नू बदलन दी नापाक जसारत कीती है। ओदा बेड़ा गरक करते ऐसे कि अपने कुरान ते काबे दा मलई एक तूफान रूह बर्पा करते मालका। मोहम्मद मुस्तफा ते दुश्मन मिटा दे। Why not actually दुश्मन मिटा दे wants to be transformed? मिटा दे। I don't know, that seems like what a Amen. human being does. You know, pray for those who persecute against you. भाभी मां Something more. अबे इसको कत्ल माशाअल्लाह। शायद असी हर बुरे ते बदमाश नाल ऐसी ले लड़दे रहे हां। Going against the Big bad bin. again. कायनात दे सब तो बुरे इंसान नाल सानू लड़ना पैना सी। रब तैनू कामयाब करे पर उस शैतान तक पहुंचना कोई कोल आ जांदा है भाभी मां। वो काफिर कदम इच किवें नहीं आएगा। ये भी हो सकता है। कैसी चाहिए
ते सानू रोना नहीं बेटे This movie is described as a के शहीद नु रोना मना है अगे दुआ है के तू लेके बुढ़े तक हर एक का मुतालबा है कि सलमान रुश्दी नु ही नहीं बल्कि उन्होंने पनाह देने वाले नु भी नेस्तो नाबूद कर दिता जाए। कुछ ही देर बाद उलमा ताजिर मुलाजिम पेशा अफराद खास तौर से कॉलेज के स्टूडेंट्स तूफान बन के सड़कों से आने वाले ने अगर आशिकाने रसूल दे इस कठ नू न रोकिया गया तो पूरे शहर में अग लग जाएगी। लिहाजा इस जुलूस नू रोकना है दिली गोली भी चलानी पे तो दरेब न कर जेड़ा कानून वो कानून गरीब इंसान वैश्य दिवस such the demonstration. जेड़े अज वैश्य नहीं खोल गए Call to violence. ए उसका Like a अल्लाह से रसूल की गैरत दा खबा है जुलूस कोई नहीं रोक सकता जुलूस तक मर्डर आई तेनू मिस्टर टी उसका अन्ना demonstrations. Oh, sorry. I'm just basically going through kind of the review of that with what we've already seen. Yeah, it's just there's not much yet. We're going to get back to where we were before and try to finish this movie off, but it's just a bunch of filler that we've seen so far. So disgusting what we're hearing here. In this scene, this so-called demonstration is calling for doing violence against another person. It's pretty horrendous. These are the heroes. It reminds me of this horrible book called The Turner Diaries, which was a white supremacist fantasy, where the so-called heroes wanted to destroy Jews and black people and anybody who was like a minority. That was what the whole book was about. It was about basically the great, wonderful white people were going to destroy, take back their land and make it white according to their beliefs. But they were the most vile, horrible people, and they actually attacked and destroyed people who were of pure European ancestry. That's really what it is. Especially women who had interactions with men who were not of European ancestry. Horrendous, disgusting, violent. It reminds me of this. So. पप्पू खुदा दा वास्ते मरी ना बेबी जो मंगया तुसी हमेशा लिया के दिता चाचा जी आज ताड़े कोल एक आखिरी तोहफा मंग दिया दोगे हां बेबी बोल की चाहिए सलमान रिश्तेदार चाहिए बेबी उतार ले चल लवा What a horrible thing to ask when you're क्या सीना Yours is horrible. You should have that. Knew Salman Rushdie, but Pakistani violent demonstration. सिर्फ तेरे ही बच्चे शहीद नहीं हुए जीनत बेशुमार बच्चे अपनी अम्मा तक नहीं पहुंच सके तो फिर मेरे बने नहीं जाने जुलूस पर होते तुम हंसी बहादुर अफसर जुलूस रखने वाले का हिसाब लेने लई मेरे मगर जरूर आएगा लेकिन why does this civilian have guns? Especially these are that their own family members let off the hook. I actually did दुख मैंने सिर्फ इस गल दा
You see this word kuta and shaitan, you're going to see a lot throughout this film. A kuta is a dog. I don't know. I really like dogs, so it's like this strange thing to call someone a dog. Like you think of a cute Labrador or, a golden retriever, and I don't know if someone calls someone that, it's like, oh wow, that means you're like adorable. But the way they use this word, it's like you're such a nasty thing. Like a dog is like a nasty thing. I don't know. Maybe they just never interacted with dogs and they know nothing about dogs. Yeah, it's really weird. And shaitan is another word. They don't even know what the word shaitan is. Shaitan is from Satan, Hasatan. It's an adversary. It's just like a bad guy. Shaitan is just like a demon, I guess. Oh, and that's such a vile, disgusting thing too. He says, forgiveness is for Muslims. So it's just for your people. It's not for all humanity. Yeah, really vile and gross. We don't really even know who this woman is. We see her as a police officer, and she always has her eyeliner on fleek, and her eyebrows are like perfect. They looks like she's gotten her eyebrows done very well. Yeah, lots of makeup. This about Islam. This woman who looks like she's like ready to go. Oh, it's about Islam. शराफती अलम बरदार और किस तरह से मेरे मौला तेरे प्यारे नबी दा वास्ता साधु सलमान रुश्दी तो अपने हबीब दा वास्ता है मोहम्मद पाक दे मुजाहिदा नु मंजिल वखा दे समंदर अब लियार वाले So this is basically the intro to show us about Salman Rushdie. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ So they try to make these people look like heroes, but these are actually assassins who are trying to take his life. So I'm like, I don't know. It's very hard because this movie doesn't know how to make someone look like a good guy. It doesn't really know how to tell a narrative to showcase that their person is good. They make their heroes look basically the same as their villains, which is deeply problematic. Yeah, I'm giving a recap of the film. Exactly. Yeah, we're doing an entire recap, and then we're just going to finish the film right now. Yeah, I'm on stream, so maybe I'll have to look at the YouTube. I can do that. It's fine. I could do that. Oh, like a perra. But it's different. Like the idea, I get that, but that's because that word has a connotation. But it's just like weird to keep hearing people calling people. It's not female dog. It's just dog in general. It's just so weird. ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ So basically, Salman Rushdie now executes people who tried to execute him.
जदों भी आशिकाने रसूल दा खून मेरे सीने ते डुलिया है आसमान ते खुदा ते जमीन ते खुदाई परेशान हो जांदी है ये होई मैं चाहता सा ते ये होई हो रहा है ते वो तो तक हुंदा रहेगा जदों तक इस जमीन ते वसन वाला एक एक मुसलमान खत्म नहीं हो जाता मरन वाले इन्हां मुसलमानां ने तुहानू अमर कर दिता सलमान और दुनिया दे हर It's so इकबाल दे funny. पहले The hero and the villains are not really different. This is what's shocking. सते दी पहली It सुर्खी shows that you have a really bad film where your hero and the villain, you can't really tell the difference. तुहाडा ना होवेगा तुहाडा Oh, yeah, we got कमांडर जी सी तेरी कारकर्दगी वेख के एहसास होता है कि असी यहूदी फौज दे इस कमांडर नु उधार लेके कोई गलती नहीं की we appointed a commander from the Jewish family. लेकिन एक अन्ना दे इतने तरबियत याफ्ता गुरीले Keep these Muslim girls. जो तेरी सिस्टर ओ यस उदी आंखा रडार ने She's got मुसलमान Muslim किसे radar. रूप विच भी होवे This Jewish उदी woman आंख has उन्हां लई Muslim radar. मकसदीस Dolly. ते हक मौत बन जाते ने And then we're going to see ओ आई सी we'll get to where we were. बातू बातू ओ कुड़ी नहीं कयामत ए कयामत सलमान जी Looks like I think they're trying to say she's कमांडर like she's, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ देयर this has matching color. वाओ बेशक ये अखां किसी भी वजूद चों आर पार हो सकती ने इन्हां अखां च इको इतराफ करदा है सलमान Eyes इन्हां are able अखां दी to अजमत kind of see who's a Muslim, who's अपनी not. जान And you'll दी see that throughout the हिफाजत story. तेरे हवाले करने मारन दी नौबत आई She's just ते मार all दिया this ये अखां meanderings. आज दी Now we got some film. And it can next. ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕ ਜਵਾਨੀ ਕੱਕੇ ਚਿਹਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਚਸਕੇ Harry to ਹੱਥ yourself. ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਮਸਕੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਮਸਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕ ਜਵਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਚਸਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ हाय दिल वाले ले हंस 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 नाम मस्के अंग अंग विच मैं एक बारी चमके मैनू देख न जाए दोबारा मेरे नैना विच हर कोई डूबदा This is so much fun. Most traditional Bollywood songs have a song that really has nothing. It doesn't tell us anything about the movie. It's just a song for the sake of having a song. And she's also the character's much more reserved. She doesn't want this character. So it makes no sense. मुताबिक Wow, सर
real great translation. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰੀਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਮਾਂਡਰ ਜੀ ਸੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ। ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਹਾਜ਼ I ਨੂੰ know, it looks like that, right? ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰ। You know, he's joking. Sonic is joking. The thing is, this movie's actually from the 90s, but the problem is this is like stripped from like a VHS tape. That's why I keep saying Rio video on the side. So this came from like a Rio videotape. Basically, what I'm saying throughout the thing is what we're doing a recap of what we've already seen, because we have 4 other parts, but I think some of y'all may have not seen the whole thing. We're just doing a recap, and we're going to finish the movie today. So basically, what we've covered so far is you have the first scene where you show all the evil people drinking alcohol and they're wanting to destroy Islam. That's part 1. Part 2 is you see this kind of like bar, and you're introduced to the main characters, and you find out like 2 of them are actually gangsters themselves, and then one of the other main characters brings them to their house and says, hey, I'm bringing these people who are going against the law to the house. And then the one guy, he becomes serious after, and both of them were kind of lascivious as well. They characterize them, but there's no real consistent characterization of these characters, which just makes no sense. But they go to the house. It's established that they're kind of struggling because even though they went to college, they can't find a job because the economy is really bad. That seems like it would be a good plot for another movie, but such sort of an aside here, thrown away. Third scene, let's see. Oh yeah, they talk about that they're going to be in a newspaper talking about how good they will be. Then basically the movie starts. This is like when the movie is really starting, where basically the plot is Salman Rushdie wrote the Satanic Verses. Muslims are in an outrage. They talk about the fatwa against him from Ayatollah, and basically they're like, we have to destroy Salman Rushdie because he wrote this book. Basically, then they show the police saying, hey, we have to stop this demonstration, this violent demonstration. Then we cut to the scene of thugs trying to destroy Islam again or do bad things. Really has no points of filler scene. Oh yeah, and forgot to say, in the second scene, they have a whole pointless dance singing scene that has nothing to do with the movie at all. I mean, that Bollywood has singing and dancing, but usually these scenes either intensify the emotional thing, if it's a romantic scene, like the romantic relationship between the hero and the heroine. That's usually what they do. They're useful. They're utilitarian. These songs aren't just for nothing. In this movie so far, this song is for nothing. The first song has nothing to do with it. Then what happened? Then they go to the demonstration. Oh yeah, and in the police thing, 2 of the people who are the main characters renounce being a police officer. They resign because they say, we can't stop violent protesters who want to take people's lives because they're against Islam. Very Islamic, very for a person who is like a peaceful Muslim, a progressive Muslim, this is like pretty heinous, what this film is saying. Muslims who want peace and love and compassion. This is really kind of assaulting them. Muslims who can actually take criticism. Obviously, these people cannot. So then basically what happens is they have the protest, lots of close-ups. This guy Gampat that we saw in the second scene, he's like a businessman informant. They kind of tell us about him, but he's sort of like an unimportant character because he gets eliminated here in this situation. And then 2 of the children that were from like the third scene who are protesting get killed, and the one of them is called Papu, the other one's called Baby. It makes a lot of sense.
baby asks for the execution of Salman Rushdie as her prayer, and the other woman is making prayer too to kill Salman Rushdie in a storm to come and fight against, the people who are against the Prophet of Islam. It sounds really cultish. Does not sound like a really invigorated Muslim at all. If someone really wanted to do super anti-Islamic propaganda, you can just show this film. You don't even have to make any other like movie or anything. You just show this, and you can show how extreme and radicalized these people are. It's pretty bad. Then what happens next is they are on the route to take out Salman Rushdie. And then they showcase Salman Rushdie's place. There's these assassins who are trying to get Salman Rushdie. They're all dressed up in Arabian and I guess quote unquote Islamic attire from different areas. Looks like it's some kind of Russian type of stuff and Saudi and I guess whatever the wardrobe department had on staff. Fake beards, everything. It's definitely not a real beard. I guess they didn't grow real beards at the time, huh? Or at least actors didn't have that, so they just put some like felt and said it's a beard. Basically Salman Rushdie licks the blade and starts sniffing the blood of the people he just did, like really creepy. And then we are introduced to Dali, Commander JC. Yeah, there's Chief Batu and Commander JC, who are Israeli Jews who want to destroy Islam as well. Here's a snippet. Jews don't want to destroy Islam. At most, Jews are apathetic towards Islam. And I'm talking about hyper-conservative Jews. They have no interest in destroying Islam. Islam is irrelevant to Jewish people, even your very conservative ones. They may not. The more of the antagonism is Jewish and Arab. So if there's a critique of Islam, it's because of Arab identity. So it has nothing to do with Islam. So if a Jewish person is critiquing Islam, it's because of the Arab identity, not because of the Islamic identity. That's an important clarity. Yeah, Jews don't really care about Christianity or Islam. These are not important things for Jewish people across all strains. So that's an important thing to note. But I mean, conspiracy theories, they have that. So yeah, we saw Dali. What else was there? I think I've covered mostly. Land te karan do, sir. Oh, now they're trying to get this. This is our title. That makes sense though, because a guerrilla is like a small faction that's fighting a big army. You might say something like it's like an unofficial independent group that's fighting a stronger army or government. I guess they're trying to say Salman Rushdie's thing is an army and government. I don't know. I don't think that really. So here's Dali. So this is how we see Dali. She's very kind of. She's very kind of emotionless. She's like an agent. So it makes no sense about her pointless filler scene of her dancing and singing. These people are coming in and they discover that. Okay, thank you, Lolly. So that's Commander Jason. Now the following guerrillas. I don't think we really introduced her. We kind of have to follow through. What is name Bilal? The other one's name Bilal. Now they're running away. It's like a very long chase. This is actually one of the things I couldn't stand in Black Panther. They had this annoying like chase scene in Korea, and it was so pointless. We're gonna get through this movie pretty quickly because a lot of it's just filler.
साडा पिवा ओए बेवकूफो जे सलमान नु मारना एडा आसान होंदा ते एक इंसान. So this is another critique. It's a dig at Salman Rushdie. But this is a plot this is like the major thing that we're going to see through the movie that really starts here in almost the hour mark. It's basically the guerrillas kind of engage with the villains. The villains catch the guerrillas escape. The guerrillas then try to get the villain. Then they get captured. Then they escape. And you're just going to see this circular plot over and over and over again through the last 2 hours of this, or around almost 2 hours of this. Number 1 माल दा लालच. नंबर 2 बहुत ज्यादा. ओए तुहानू हले भी यकीन है कि तुहानू कोई बचा लेगा ते फिर ओदे इशारे ते साडी मौत भी टाली जा सकती हो. So that character that we saw before was this kind of goofy, lascivious character in the bar. Now he's strong and powerful, and it makes no sense for the plot of this film. They should have just made him like that throughout the whole movie. It's very poor plotting. No! Yes, we're tying them up, and the problem is the heroes are no different than the villains. So it's you can't really root for these heroes. I mean, होता है. Let's see, obviously they did get caught. They didn't clearly establish that, but they caught 2 of them, but they didn't actually shake. कि सारे शहर दी सैर भी नहीं कर सके. And they keep playing this पूरा किला भी आरे हाथों में. सीधियां 2 खबरां लेके आया. पहली पाकिस्तानी गुरिलियां दी मौत, तो दूजी दुबई दे It's another part of the plot. This is showcasing sort of, I guess, the filmmaker's view of Arabs and Arab Muslims. But the problem is that they are kind of, Islam isn't somehow more sophisticated and better. They're going to show Arabs as these lascivious people that are not really Muslim and don't really practice Islam. But somehow they do, even though they aren't dressing modestly. They're not doing anything according to a very conservative view of Islam, although they're portraying themselves as such. The Dubai Sheikh you're going to see. It's really over the top. It's Dali's eye really slides here. I guess they're trying Stop! Anna Sheikh Abdul Fanus, Secretary to Sheikh Abdul Kareem, Sheikh Abdul Kareem, जहाज के अंदर मुकीम शेख अब्दुल करीम आमन ताश के पत्ते 52 हबीबी हैया हैया like I said, साडे शेख साहब दा ते पजामा घोड़ा लाओ सुखी सलामी Welcome, Sheikh Saab, welcome. And they're trying to put some हमारा क़याम किधर फंदकुल मून अहमलूना अगली बचकूना हाथों तो नहीं पड़ी दा गल कर मूना दुर्फले मूना Up, Mr. Chief. They're supposed to be kind of funny. Doesn't really work too well. पर तू ना Hello. Okay, sir. Salman Rushdie on the line. Hello, Salman Patel. I'm proprietor of ship
no potato होगा हैगा सानू मिलन दा शौक शादी मुकाओ की मुलाकात चले नु किसी चीज शुक्रन पहले दसो घटिया हरकत नहीं कर सकते कामयाबी और ऐसी सरक होवे भाईजान मुबारक होवे भाईजान मुबारक होवे पहला सफर ते पहली कामयाबी और ऐसी सलमान रुश्दी तक पहुंच जावांगे वो किस तरह ऐसे ते बैठ के टुर जाएंगे वैसे बहुत अच्छा उड़ता है कौन कौन कर रहे हैं ते मून स्टार होटल दे कमरा नंबर Somehow they know 137 where the लो shakes are. तेरे सिवा कोई नहीं इधर उठाएंगे या केक न पान लगा न चूना ध्यान Yeah, न so कोई we're किधर seeing निकल those जाए things पूना like shakes. They're looking for women. They want शेख साहब जुम्मा बाजार कदों लगना है when will the boys get here? सर सलमान रुश्दी दा फोन है But that's not a stereotype. शेख साहब And somehow the Pakistanis I said this, jazz functionist. सलमान कुशल पे है अल्लाह या शेख हुक्का पी रही Yeah, I mean, this movie really hits every disgusting stereotype you could think of. It's really disgusting and gross. It's very anti-Arab here, as you can see. It's not. It's supposed to be pro-Pakistani. Yeah, I don't even think we have an actual thing of this film. It's from a long time ago, and it's very offensive. Yeah, Jewish people have no interest in these things, exactly. Well, it's not made by Arab Muslims. I mean, if I was if I was like, let's say, a person from Dubai, I would say this is an extremely insulting, offensive film, So, yeah. हेलो ओह लड़कियों ना अब्दुल तुम जल्दी आओ ना ते उन्हें बिल्कुल बेकार है सादा से kind of lascivious type of nature that these men are really kind of disgusting and gross and they just want to get their hands on a woman. रोज दा घर ओके लोड पै गई है Okay, let's go. ये औरत कौन है? पहले तो कुछ गड़बड़ लगती है औरत उन्हों दी साथी ते नहीं जबान बंद रख कमांडर What's strange is Dolly is a person who can see through eyes, and it's interesting that why would they just let this strange person come in? They said, "Oh, it's because the sheikh can see whoever they want." I'm like, that makes absolutely no sense. अच्छी सलमान दे मेहमान थे अस्सलाम वालेकुम या What's रफीक going across his man? मैं टूटी है हमार हजाम मैं करीम Super creepy. Let's find out who this woman is. बारी बारी ओए गौर ना मेरी मिस्र दी पर्दारों फुफी यानी नहीं हो तेरी मशहूर मेरी चालबाज हर मुल्क दे ठाणे च तेरा ना हर मुल्क च तेनु गोली दा आर्डर इससे वास्ते अगले ने दुबई च तेरा हर मुल्क है दुबई दे चालबाज आए औकात ना भूलो है दुबई दे चालबाज. Okay, this thing makes absolutely no sense here. They're having this useless exposition, but it leads into the next. So basically, what the guy, the secretary, is saying to the Dubai Sheikh is that he's like a thief and he's on every wanted list, which makes no sense. How would he get into the country? It's ridiculous. It makes no sense. But the point is, about this character. क्यों मशूक च करंट तू वसूल कर ले जा. It's Javed Sheikh wearing a dress. Yeah. And he recorded everything so that he could block it out. What a great कोई ऐसी ते आप हले तक सलमान रुश्दी को नहीं पहुंच तू कब उसके छुआ Yeah. ते मैं तोड़ा एनु चलाया ते पुलिस तुहानू मारे. I have to make sense of this movie. I've been watched this movie like 5 times
maybe even more. And there's still, I have to learn what is actually going on in the plot because it's so unclear. बस जो कुछ कमा ओ कर दे जाओ हुणे शेख साहब उड्डणगे मेरे हथों मैं पहली बारी पिछू दी होके मिल पैंदा खराब है connected to the Ottoman rule. I don't know what the purpose of that is. I guess it's trying to show that they're legitimate. पंचर हो गया पहिया पहिया मेरा शहजादा आ रहा है I guess it's what family is covered. They're all wearing Arabian clothing. This is not good for filmmaking where you just keep introducing lots of characters. They have really nothing to do with the plot. It's very unhelpful. चखूना लगूना लगूना चूना इथों दे अमीर Yellow glasses. Creepy men looking at women. Wow, it's amazing. I guess the directors. ऐसा ना डॉली है सलमान दा साथी कमांडर जैसन दी हमशीर No. वल्द कौन कतीर शुक्रान शुक्रान समझून समझून तुसी सिर्फ अरबी जानते हो हसमिना थोड़ी थोड़ी फ्रेंचून And this is my joke. She's asking, does he speak only Arabic? And he's speaking in Urdu that he can speak other. It's so ridiculous. He's not even speaking Arabic. थोड़ी थोड़ी पंजाबियों वैसे मैं अखां दी ज़बान भी जानना वा अखां ते एतबार नहीं करीदा ऐना तो पच कौन सकता है यार फिकुन तो अखां कह रही है ने Why, if this was actually a smart film, they would actually have someone who could speak Arabic and then just subtitle it. But, you know, we're not dealing with very smart people here. वो ज़बान पे क्यों नहीं Okay, this is our next filler dance. And the reason why she's doing this dancing and singing is because the directors are misogynists and they just want to put a pretty woman to dance and sing, even though it has nothing to do with her character. Yeah, all a woman is going to sing about is her beauty. Correct. There's so much filler here that it actually takes away from actually what the plot of the film is. So I'm going to teach you something a little bit about Islam. So there's a thing called the mahram and non-mahram. So like a man is not supposed, especially an Islamic man, is not supposed to be touching a woman. If these are like very conservative religious Muslim men, you're not supposed to be touching a woman that you're not married to that's outside your fold. They're a non-mahram. So the problem is they're trying to push religious fanaticism. Like if someone attacks the Prophet of Islam, you can go on a violent rage. But I'm like, they're not following basic like Sharia type stuff. That's the irony of this film, you know? And you see this a lot. Like you see these men doing these things that I'm like, an Islamic, like a person who's following conservative Islamic rules, they're not going to dress like this. They're not going to look like this. They're not going to behave this way.
So do you see how long that went? It's like minutes and minutes of this just song and dance. जिस जुबान नाल तू साडे हुजूर दी शान विच गुस्ताखी कीती है कमीने आज तेरी हो हुई जुबान कुत्ते खानगे कुत्ते I mean, I'm not trying to be rude, but that sounds super cultish. That you're like, someone offends something, that you're going to go and take their life and then take their tongue and feed it to dogs. That's like, there's something wrong with you. There's something mentally wrong with you. Muhammad Mustafa de Ghulam, tera jo hashar karange ke teri kabar bhi tenu pana nahi davegi. पता नहीं ये मर्जी मेरे खुदा दी है तेरा भी होती उम्र किताब में शैतानी आयत करेगा ओ कुत्ते दी मौत आज जैसी तेरी पोटी and they keep talking about dogs, like they're obsessed with dogs. पोटी करे कोई तेनु इत्थे बुलांदे ते मैं कदों दा कत्ल हो गया हुंदा The problem is they're trying to be like Commando, but they don't have the power of a like Arnold Schwarzenegger. They don't look like Arnold Schwarzenegger, and they don't even like in the Arnold Schwarzenegger movies. Like he has a like in a lot of these American movies, they have like this bona fide that they were like ex-Green Beret or they were one of the greatest warriors on the battlefield. Two of the guys are just like basic thugs, and the other guy's a police officer. Like. That's what they should spend the plot doing, but it's they're not So we have a lot of filler action scenes and a lot of filler singing scenes. So we're just going to Oh yeah. बस हो गए खुश मुकम्मल हो गया तुम्हारा जहाज और बेवकूफो सलमान नहीं मर सकता सलमान अमर है ते हमेशा अमर रहेगा Yeah, it was a body double. It wasn't really summoned. It was Sheikh Uthman. Instead of it being Salman Rushdie, they got Sheikh Uthman. Yeah, I know. You're right. Yep, they got Sheikh Uthman. Here is Sheikh Uthman. We should make a meme about that. We need to get a meme and put Sheikh Uthman's face on the sky. ये देखिए एनु सिर सुट के देखिए ते ओनु सिर चुक के देखोगे There's really something. पर तय करके आए अस्सी तेरे ते लतान
घबराओ नहीं भी मौजूद मुर्तद भी मौजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते. So, like the plot I said before, they attack, they get kidnapped. You're just gonna keep seeing this. It's बेशुमार दोस्तों दे मान भाईजान तुसी आ गए हो इना बेलचियां दे मुंह वाले गुरीले ने सानू बड़ा ही तंग इंसान नहीं बोल सकते आज ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ की शुक्रगुजारा डॉली कि तेरी अखा ने सानू खतरे तो बर वक्त आगा कीता चीफ बातू So her eyes saw that the girl. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ तंगा नानो मेरे हेलीकॉप्टर के रही एक उधर वेख इस चीफ कोलों बच के रही एक किधरे सानू डूंगे समुद्र दे विच धक्का मतलब नहीं समझदा ना की करो सलमान सिर ते पहुंच So this is another filler action scene. We're really gonna get to this movie fast. गैरेज चलो मेरे सामने पेश होने Somehow they have scuba gear? How did that happen? They don't tell us. They were about to get rescued by a helicopter. शिगुफ्ता तू इथे Shaguta. I didn't even know that was her name is Shaguta. Wow. That's how they don't even introduce our characters. A Steven Seagal movie would do better than this. They at least put title cards and let us know who we're dealing with. We have to kind of figure out who the characters are by just watching the film and seeing whenever they say the person's name. The movie is very cultish. It's like they keep saying the love of Muhammad. We don't even know who Muhammad is from this movie. And they just keep, and I'm like, if a person didn't know anything about Islam and they watched this movie and they kept saying, for the love of Muhammad, for the love of Muhammad, you'd be like, you're really creepy. You're really weird. Like it doesn't sound, it sounds like you're worshiping this man, worshiping this thing called Muhammad. It almost sounds like that. It sounds like a god that's being talked about. It's really, really creepy. Yeah, you have to. It is so funny. But it's extremely creepy. I am creeped out the wazoo from this situation. You see, it's like anybody who says anything bad about him, we can hurt them. I'm like, it's like, what is this? Is this a deity? What is this thing? Like, it's what is this being? I should say, because they call him him, so that's the pronoun. But it's like very, very creepy. The way that they're talking about Muhammad is super creepy. It does not seem like a prophet of Islam that you follow. Like, I don't know, like, even when you think of like a parent, someone insults your parent, you would never behave this way. You wouldn't be like, I need to go and destroy them.
don't worry. आज पहली ते गुस्ताख रसूल दे पैरों ना दे सिरा ते I have no idea. He like Marcellus. So I'm gonna show you something, I guess. The plot wise it makes sense. आज पहली बारी आशिकाने रसूल Don't worry, जी, don't worry. पूरे समंदर नु सर ऐसे सारे मार के This makes no sense either. I guess they're saying the gorillas did it. I don't know. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ So the obsession with Pakistan, gorillas, and the Prophet of Islam. Oh boy. तुसी कर अनेच Find out that we दुख दिल तुसी करो की गए हो ना ही कोई बुआ खड़कांदा है किथे हो सारे गुलाम ते जावेद कार लेट आदे सन तेने कार आना छोड़ देता है ते तुसी समझाना छोड़ देता है क्यों जीनत में we're gonna get to it. I know it's super weird. ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ओदे अथरू ते And you know, Fairy, it's not even like a healthy relationship with God. I don't know, like I think a normal relationship with God, it's more like if someone offended God, like a normal human being, like how can you offend God? Because God is beyond all of that, right? Like it's how a normal human being behaves. How these people behave, it's like this is like if you don't defend this God, the God is going to hurt you. It's like really weird. You don't really know why they need to act this zealous, but it doesn't seem like any kind of healthy relationship with any. तुसी पूंछ लोगे It's really it's पर अभिमा बेबी ते पप्पू सन बहुत याद we're supposed to feel emotional and it's not working. कर रहे हो जीनत हाँ जीनत ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ मैं कदों गया पर है दसो मंजिल मिलन दी कदों तक आस है Unsin. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ओ मंजर देखन नु मेरा भी जी करता सरताज This is the most पर तू फिक्र ना कर I've ever seen in my life. इंशाल्लाह मैं बड़ी छेती तेनू बुला लवांगा There's someone who has a different एक ही करनी है शिकु than you. कि मैं तोड़े दिल तक पहुंच सका Wow, super creepy. They're on this mission, and of course he's a lascivious creeper. Wow, amazing. सलमान रुश्दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ लेकिन ना खत्म होने वाले पहाड़ी इलाके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਵੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਪੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਉੜਨ ਤੇ ਪਗਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉੜਨ ਤਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ We looked at this. ਤੇ ਵੱਜ When ਸਾਨੂੰ the sheikhs got hurt, we didn't really see how. I guess it's from the gorillas. ਨਾਲ ਦਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ They look like disco dancers. ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟੜੀ ਓਏ ਜਾਮ ਕੇ डॉक्टर मेरा ख्याल है होने ने तो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
शेख साहब कीप क्वाइट, बिल्कुल पसंद नहीं, अंडरस्टैंड? मैं समझना वहां, लेकिन जिंदगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। हेलो शेख साहब, और कैसी तबीयत है? की मतलब शेख साहब कहते ने भी इन्हों दर्दार जे इन्हां दा फौरी ऑपरेशन ना किया गया ते इन्हां दी अल्लाह फिर तो मैं दुनिया छड़न वास्ते सलमान ने अपने जाती कमांडो न करो ते नाले फुल ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुई अंदर है थी, और सुई किथे ला देते? ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ So now Dolly is ਇਹ saying ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ that ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ there's no reason for it. ਸਲਮਾਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਪਾਓ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਮ ਔਨ क्या कुछ सी ते करके कुछ आए हो जान दियो किन्नू ना ले आए हो ये यहूदन Yahuda. Yeah, we saw this. Yahuda. We know what that means. Of course, anti-Semitism has got to come in. Yahuda. इन्ने बड़ी चालाकी नाल मेरे तक पहुंचन दा रास्ता लभ्या हुण इहदे पिछे ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ They're in the right. Yeah, in the right of what? Going and doing an assassination, going and killing people indiscriminately. Right of what exactly? ਤੇ ਦੂਜੀ भाईजान इन्हें वादा कीता कि सानू The second is she's going to bring them to Salman Rushdie. सलमान रुश्दी तक पहुंचाएगी ਜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ दोस्त कोलो दोस्त भरा ते बादशाह कोलो तख्त खोन दी ताकत रखती है जे तेन में देते तुम्हारे ते फिर तू साडे कोलो उदों तक दूर रह जदों तक तेरा मुंह सलमान रुश्दी वल नहीं कर देंदी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈਜਾਨ तू फिक्र न कर मैं अपने मिशन तो गाफिल नहीं हर वेले मुहतात हूं बड़ी एहतियात की है जावेद पर सोचनिया तेरे मेरे मजहब की दीवार सानू मिलन नहीं देगी But the differences in our religions will not make it easy for us to unite. Why does she like him? तू अपने हथा ना मैनू गोली मार दे Shoot me with your hands. इसलिए कि हम तेरे बगैर जिंदगी बिल्कुल बेकार लगती है ते फिर मैं गोली मार भी देंगा ते फिर सोचना की समझ ले साढ़े प्यार का इम्तिहान है चला गोली जो डर गया वो मर गया चल गई इश्क दी गोली चल गई ओ नो चल गई पता नहीं चल गई At least it's kind of like a traditional Bollywood movie where it's actually about like
the romance, this plot. A romance that came out of nowhere and makes no sense, but yeah. शुरू हुई आगे लग गई बल दिए रहेगी डालेगा चल गई जानू इश्क की गोली चल गई Well done, Dolly. Really well done. जिस अंदाज ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਲਾਕ ਲੂਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। Well done, Dolly. Well done. मैं एवं नहीं सकता कि मार का जदों भी मारेगी, सिर्फ Dolly मारेगी। डॉली एम की सुन रहा वां ते की देख रहा वां? छोड़ी जज्बाती ते बेवकूफ नू सुनना ते देखना चाहिए। दलील बेखैरत अज मैनू हुजूर पाक दी ओह हदीस याद आ रही है। की होया? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तेनू इसलिए नहीं मार दिया बच्चे जे तू गलत राह ते पाया ते तेरे सारे जिस्म विच सुराख ही सुराख कर देंगा। खोले दिया रस्सियां डॉली दिसी ओदे बाद सलमान रुशी तक पहुंचा दिए सारी इसकी। खोले दिया रस्सियां सलमान रुशी तक पहुंचा दिए सारी स्कीम डॉली दिसी ओदे बदले उन्हें एक कोई वादा लिता सी कि ओदे भरा नूं जिंदा छड़ दिता जा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇਗੀ। हथियार सुट दियो नहीं ते ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। यहूदी असली चोर दरवाजे बंद करना सिख के आया। ऐसे ले दुनिया सानू इंटरनेशनल गोरिले कहती है। Come on! Hey, come on! You notice there's no Christians in here? They're not fighting Christians. The obsession with Jews is like, it's sickening. It's like really, really vile.
It's like the Jews are like the great enemy of all time. भाईजान, देखो निकलने वाली गाड़ी को क्या पड़ रही है? तुसी सारे ने कई बार दावे कीते कि गुरीले कत्ल हो गए ने, पर वो हर बार बचते रहे ने। मैं पूछना कि बिल्ली ते चूहे दा खेल कदों ते किस तरह मुकेगा। आई वांट द आंसर राइट नाउ। किस्मत हर बारी उन्हां दा साथ देंदी है जी। माइंड यू चीफ, शिकस्त खान वाले हमेशा किस्मत दा रोना रोंदन। यस यस, हुण उन्हां लई जाल मैं आप बिछावांगा। जाल बिछाना कोई मुश्किल नहीं सर, लेकिन जिथे वो पहले रहंदे सन शायद वो जगह उन्होंने बदल ली। पता नहीं साडे दुश्मनां नूं किने पनाह दे दित्ती है। पूरे शहर पोस्टर लवा दो कि सलमान रुश्दी दुनिया दे सब तो वड्डे कसीनो कम डिस्को दा इफ्तिताह करना रहा है। मेरे लिए आजाद है कि मेरे जुए खाने सब तो पहला गांव। So why are they at this gambling place? Because, you know, gambling is haram. So it's kind of showcasing that the haramness of what's going on. Yeah, it's utterly insane. This is utterly insane. We're getting to the end though. ते ख्याल रखना सारे इंतजामात उस तरह होने चाहिए ने जिस तरह तुहानू हिदायत दित्तियां गईयां ने। तुसी क्यों खलोते हो? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੂਆ ਖਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
next. When did she get her hair done? तड़के दिले दी गटार है अति रात नू घर के प्यार दा गरम है अति रात नू तड़के दिले दी गटार है अति रात नू घर के प्यार दा गरम है अति रात नू हाय मैं जमाने की आ गया तूफान हाय मैं जमाने की आ गया तूफान तड़के दिले दी गटार है अति रात नू घर के प्यार दा गरम है अति रात नू Really makes sense. This part is सच बन के मैं आई हो गई मैं बिल्कुल सुहानी अजदा जो पर हंस के गुजरे समझो जिंदगानी सच बन के मैं आई हो गई मैं बिल्कुल सुहानी अजदा जो पर हंस के गुजरे समझो जिंदगानी तड़के दिले दी गटार है अति रात नू उखड़ के प्यार दा गरम है अति रात नू
अखलियां जुल्फां वर्गे ए रंगीन मेरे मदहोशी विच जग मैं वेखा सब दे इक्को ही चेहरे ओ मेरी अखलियां जुल्फां वर्गे ए रंगीन मेरे मदहोशी विच जग मैं वेखा सब दे इक्को ही चेहरे गटार है अच्छी रात उखड़ के प्यार का डरम है अच्छी रात Okay, this is absolutely. There are many Salman Rushdie. जिन्ने भी रूप तार लवे Who's fighting Salman Rushdie now? सादी अख तो नहीं बच सकता तेरे हर चाल ते तेरी हर चाल दा तोड़ तकदीर ने आज साढ़े हाथ दे दिता है कुत्ते तेरी इस शैतानी शक्ल नु इस तरह बगाड़ांगे कि शैतान भी तेरी शक्ल नहीं पहचान सकेगा आज कोई मौजदा स्वानु मौत को नहीं बचा सकता आज नसो ता मौत आज चीखो ता मौत ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਤੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ Couldn't get Catwoman? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ Or ਚਾਟਣਾ Batgirl? Batman played all the Salman Rushdies. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਸਾਤਾ सारी दुनिया भी तेरी मकरू शक्ल का रूप तार लेंदी ते सरफरे कायनात की कसम सारी दुनिया भी इसको नाबूद कर देंदे हैरान आके हाले तक असल कुत्ता खामोश क्यों है गोली चलाने वाली गल करो भाईजान And you have to मलकुल fight मौत Batman दी to fight नापाक रूह कब्ज करने ली बेचैन है ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ असल सलमान रुश्दी नु ते तुसी उत्थे छड्ड आए हो ਉਹ वाकई नाकाबिल शिकस्त साबित होए क्यों चीफ यस जी मैंने तेरे तक मचोली दा बड़ा ही मजा आ रहा है हुणे आग मचोली ज्यादा देर नहीं रहेगी सर गुरीलियां दी दुखती रग दा पता मिल गया मिसेस मुस्तफा ऑन द लाइन ओ गुड ਹੈਲੋ हेलो ਹੈਲੋ मैं मुस्तफा बोल रहा ਇੱਕੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ हूं ਹੈਲੋ मैं मुस्तफा बोल रहा ਇੱਕੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ फिक्र न कर जीनत बड़े कुत्ते कत्ल करांगा ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੇਗੈਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਰਤਾਜ
जिन्ने मेरे नबी पाक दी शान च गुस्ताखी कीती है। ओनू मारना इतना आसान नहीं जीनत। ए तुसी कह रहे हो? क्यों? बड़े हमले कीते पर वो हर बार बच जाता है। लगता है उन्हें अबे हयात भी लिखता है जीनत। साडी थां ते मैं हुंदी ते उस कुदी पोटी पोटी कर देंदी। ऐसे लिए ते तेनू बुला लिया बा ते मैं कल्ला रह गया जीनत। की मतलब? मेरे गुलाम ते जावेद किथे ने? उन्हां दोवां नू सलमान ने मेरे गुलाम ते जावेद किथे ने? उन्हां दोवां नू सलमान ने शदीद जख्मी कर दिता। बेहोश। This is the first time we actually get the heroes' names all together: Mustafa, Gulam, and Javed. So, Mustafa is the police officer. Gulam is the other guy with the mustache, and then Javed is, the one who is like the love interest is Javed Sheikh, and the other one is Shaguta. That's our 4 heroes. ते नहीं हो गई जीनत? नहीं नहीं नहीं। रुश्दी दे पीछे जाके कत्ल होने वाला शहीद होता है। मेरी ते दुआ है कि दोवें मर जान। एक ही कह रहे हो? नहीं जीनत, गुलाम ते जावेद शदीद जख्मी होने तो बाद भाभी माँ कह कह के रो रहनी। तू जितनी छेती भी हो सके इतना चल। मैं कल ही आ जावांगी। अपने बच्चों की खुशबू सूंघदी सूंघदी पहुंच जावांगी। हाँ। अखबार खबर दे दो चीफ कि जिस फ्लाइट ते मिसेस मुस्तफा आ रही सलमान रुश्दी उसे फ्लाइट ते इथों जा रहे। गुरीले जिथे भी होंगे Charity. Highlight news of the day. Salman Rushdie leaving the country very soon. सलमान रुश्दी ने पाकिस्तानी गोरिलिया दे खौफ तो वापस जाने का फैसला कर लिया है। सलमान नु रुखसत करन लई सारे शहर दी नाकाबंदी कर दी गई है। अज तेनू ही नहीं तेनू रुखसत करन वाले नु भी फना कर देंगे। Charity, thank you. जिन्नी मर्जी अपने आप नु लुका ले शैतान, अज तेनू मुका के ही जाना है। मेरा ख्याल है तुसी बेगम मुस्तफा हो। जी हाँ। वेलकम वेलकम। पर तुसी कौन हो? मैनू अपना ही समझो। मेरे जवेद ते गुलाम वो नहीं आए? वो ठीक है ना? हाँ ठीक ने। मैनू उन्होंने ही भेजी है। आओ चलिए।
शगुफ्ता जावेद बाकी पापी माँ I'm guessing they're all brothers and sisters now. Sister-in-law. Not very clear. It's funny that everyone's मेरी पापी मां नु छाटे मक्कारा नहीं ते मैं तेरी मौत बन जाऊंगा चला दे गोली गुलाम मेरा सितारा रहना जरूरी नहीं जिधर सलमान रुश्दी नु मारना जरूरी है जिधर पीछे तुसी आए हो चला दे गोली नहीं पापी मां नहीं सीना ठीक कहंदी है जावेद सीना ठीक कहंदी है बेबस होके मरन दी बजाए इन्हू अपने हथी मार देना बेहतर है छड़ दियो मैनू छड़ दियो मैंने ठीक कीता है भाईजान पापी मां तोड़ी इज्जत ते साडी गैरत है ते अपनी इज्जत ते गैरत दी हिफाजत करना भी साडा ही फर्ज है असी अपनी गैरत वल बदन वाले हत्थां नू रब दी तो माफ नहीं करांगे जी बातों बातों दे पिंजरे च कह दे सेना नू तुसी किवें मार सकते हो ते हुणे मैं ना उदों तक साडी कैद दी पत रहेगी जदों तक तुसी इहनू छुड़ा नहीं सलमान रुश्दी के सामने अपने आप को पेश नहीं कर देते जी बातों बातों They do. अली बेचैनी नाथ हमारे आना इंतजार करेगा मेरा अंजाम नजदीक आ गया है नजदीक आ गया है सलमान रुश्दी शैतान We're almost at the home stretch. ऐ वे उन्ना गुरिलियां दी दुख दी रग उन्हां दी दुख दी रग ते तुहाडे लिए सब तो मजबूत किला सलमान हुण एदी गन पीछे बैठ तुसी अपना मिशन आसानी नाल पूरा कर सकते हो हुण उन्हां दी कोई गोली तुहाडे तक नहीं पहुंच सकती अच्छा ते ओ कुत्ता तू है हाँ मैं ओ कुत्ता जिन्हू तेरा खसम ते दियोर कत्ल करन लई आए ने मैनू गौर नाल वेख मैं ओही शैतान हां जिन्हें आलम इस्लाम विच उछाल ले आंदा है तेरे ते रब दी लानत तेरा खाना खराब जलील बदबख्त ते इस धरती ते सब तो नापाक इंसान तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा हशर की होवेगा तू मेरा हशर वेखना चाहनी ते मैं तेनू इत्थे हशर दा मैदान बखा दियांगा
पर हाले नहीं जदों तेरा खावन ते दियोर इत्थे आए चीफ इन्हू बंद कर दे दे सिर ते साडी किताब दी टेप चला दे The greatest torture of all time. Listening to the Satanic Verses on tape. I know. It makes no sense. It's not like a movie like Commando where they're like on like a base. You know, it's a very different kind of situation. Dang, that's rough. ओ शैतानी आयात जिन्हें मुसलमान तोराना भी गुनाह समझते हैं वो आयात सुनेगी तो सारी रात सुनेगी मेरा मौला या मैंने बोला कर दे या मैंने मौत दे दे या She'd rather be deaf than listen to मोहम्मद ने आज का बेटे बचा दे I doubt she. और कोई आशिक So, here's a plug. I've actually read the Satanic Verses on my channel, so you can hear at least a good portion. I'm probably going to finish the book. It's really boring. It's not really an easy read. It's very heavily laden with South Asian stuff. Yeah, it would be torturous for a different reason. I don't think she would even understand anything that the book was saying. लेकिन तेरे कुछ लगते जरूर आणगे आज तक मैं उन्हां नू लभ्या है हुण ओ मैनू लभणगे ओ It's more filler here. A lot of this movie is filler. There's so much filler here.
ओ देखो मंजिल सामने आ गई है। मौत भी तुम्हारे सिर से आ गई है। कोई रूप कोई रास्ता तुम्हारी मौत को नहीं बचा This movie सकता। could be like जल्दी करो, probably an तुम्हारे hour सलमान long का if दीदार they cut करावा। out all the filler. चलो। That would have been a much stronger film. That's not saying that. It's like making an F- F+, but looks like they're caught. Welcome, all of you. Welcome. वरना यस सर। पाकिस्तान दे मुजाहिद, मक्के दे हाजी ते कुरान दे कारी आ रहे ने। इन्हां नूं सब तो बंदी सलामी। ओके सर। बोलो मुजाहिदो, इस्तकबाल ताड़ी शान दे मुताबिक को है या इहदे च कोई कमी रह गई? कमी सिर्फ तेरी मौत ही रह गई है मरदूत। तो फिर मार दो मैनू, मार दो, जल्दी नाल कत्ल कर दो मैनू। ताडे जज्बे दे अन्ने जोश ने मैनू कई बार कत्ल कीता, पर मैं अज भी जिंदा ते हमेशा जिंदा रहांगा। ओए सियाना, हमेशा जिंदा रहने वाली सिर्फ खुदा दी जात है। अफसोस दे होइए ये जदों भी गुस्ताख रसूल साडे सामने आया, हालात ने साडे हाथ बांध दिते ने। जे तुहाडे महबूब दे एक इशारे ते चंद दे दो टोटे हो सकते ने ते फिर तुहाडियां मामूली जंजीरां क्यों नहीं टूट सकदियां? जरूर टुटणगियां। इस तरह टुटणगियां कि इन पहाड़ों का एक एक पत्थर पुकार उठेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, मुसलमान जदों भी मौलवी बन के बोले, कमाल बोले। आज सिर्फ असली बोलेंगे गुस्ताख रसूल, एक जमीन भी It's not even a बोलेगी, real revenge story. आसमान भी Revenge बोलेगा, for what exactly? बेईमान भी बोलेगा। What, your religion gets hurt, so you go and hurt people? Like, is that revenge? I don't know. पुजन तो पहले फड़कना शोले दी फितरते गुरीले। ए अक्सनू, अगले जान में साड़ी रहेगी बेगैरता। So then why do you need to Yes, fight sir. them now? आज सिर्फ दो कम करने, एक ते ना सारे दी गैरत कढ़नी है, ते दूजी कढ़नी ना ते दिलां चो हुब्बे रसूल। जाके मिसेस मुस्तफा ते बाकियों दी भाभी मां नूं लाया, ते फिर वेख तमाशा। हाय 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 हाय, कितना दर्दनाक मंजर है। मेरा ते कलेजा पाट रहा है। आज हर रिश्ता कोल भी है ते कोल भी नहीं, हर रिश्ता जिंदा भी है पर मौत दे मुंह विच। पता नहीं क्यों आज मैनू वाकई करबला याद आ रहा है। ज़ीनत, इंज नहीं लग रहा जिवें तेरे ते शामे गरीबा आ गई। एक गल कान खोल के सुन ले कि तारीख ने करबला दे यजीद नू नहीं, हमेशा शहीद नू याद रखिया है। आखू हुणे चीका मार रहे हो, हले ते पता नहीं की होना है। आज एहो जी आखिर करांगा, एहो जी आखिर करांगा कि तुहानू वाक़या करबला भुल जाना है।
भले तेज मैदान दे सिमर आ रहे ने और देखो देखो everybody goes to simmer these targets can be covered ਇਹੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ शेख साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ Oh, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ they're doing takfir. They're doing takfir on the Arabs and saying they're bad. I'm like, and why are you good? What makes you a correct Muslim? आप कत्ल करोगे ਇਹ ਸਾਡੀ ख्वाहिश है कि मुसलमान दी शहरत ते वार मुसलमान ही करे ए दोवे ना दे मुसलमान ने ते विचों मुनाफिक ने मुनाफिक याद रखे मरदूत अपने परम दा कोई दुख नहीं मुहम्मद दे जड़े गुलाम होंदे ने वो कभी माल पिछे तेरे वर्गे सूर दे गुलाम नहीं होंदे एक ही बदतमीजी है चुप करके खलो तू की समझदा सी कि असि तेरे जे शैतान दे मेहमान हां ओए असि ते नबी पाक सरकार दे गुलाम हां आए तू समझदा से असी शेख हां असी दुबई दे चालबाज हां इस चालबाजी दा जिंदगी च पहली बारी ठीक इस्तेमाल की असि ना गुरीलियां दी मुखबरी ऐसे ही करते रहे हां कि असि तेरे नजदीक आ सकिए तेरे नजदीक What exactly is what you're doing is good? You're doing violence? That's good? Like, that's what he's telling us. बड़ी वो है तेरे अंदर तरह नहाया कर तेजाब ना असले दा जहाज ते सिर्फ तेरे जय इंसानियत दे दुश्मन दे घर तक पहुंचण दा एक बहाना सी चिट्टे चूहे ओए तेनू असला की देना है तेरा ते अपना असला ठीक नहीं ओ हुन साडा असली रूप देखो ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ कोई आवे या ना आवे पर ओदी रहमत साडे लिए जरूर आवेगी जरूर आवेगी जदों सारे मर जाओगे ओए बेवकूफो जे कुछ कर सकते हो ते करो सलमान 1 मिनट विच अमेरिका पहुंच सकता है 2 मिनट विच इस्राइल नाल टेलीफोन ते गल कर सकता है तुम्हारी आवाज उत्ते तक कदों पहुंचेगी मेरे अमाल का जी आज भी तू मोहम्मद पाक ते सदके विच मौजज़ाना वखाया ते मोहम्मद मुस्तफा ते मुसलमाना दा मान टूट जाएगा Okay, this is ऐसी गुनाहगार हां ते तू ते बख्शन हारे रहमतुल्लाह आलमीन दे सदके विच इन्हां काफरां दे मुंह मोड़ दे मौला तेरा की शान सब तो बड़ी किताब पे नाज़िल हुआ कुरान
सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ए फलक ए ज़मीन तेरे दम तो हसीन तेरी नजरे करम दे तलबगारा तेरी अज़मत सच्चे परस्तारा तेरे आशिक का बेशक गुनाहगार सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ए फलक ए ज़मीन तेरे दम तो हसीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन The nasheed, Islamic song. It's really weird to see it in this movie. See all these people जिन्नू कदी बुझा नहीं सकता कुफर दा कोई तूफान महबूबे खुदा अहमदे मुस्तफा शाबाते शहनशाह शाफिरो दे जजा लाज रखना पड़े शर्मसारा तेरी अज़मत सच्चे परस्तारा तेरे आशिक का बेशक गुनाहगार सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन. So what's ironic in this nasheed, they're saying rahmatul lil alameen, right? That means the mercy to all the worlds. And these are the least merciful, least compassionate, most monstrous characters you could ever see. Yet they're singing about the mercy of God. And they're singing about the prophet being the master of the messengers, which is not even what the Quran says. It says there's no distinction between the prophets. So I'm like, wow, this is kind of a interesting type of thing to even frame, you know? So it's funny. Okay, we got this stock footage of people going to Hajj. So what they're wearing is a thing called an ihram. An ihram is sort of a symbolic element of a shroud. So when you get buried in Islamic, and I would say in Jewish tradition too, and maybe some Christians do it too, because some Christians do cremation also, but you get buried in a shroud. So it's like kind of like a burial gown. So yeah, this is, and the idea is when you're going to Hajj, it's kind of like maybe there's a potential that you might die. So it's that kind of thing. There's the Kaaba. It's like from 7. जाली राजे पाक दी प्यासियां अखियां दे नल लाइए दिल का कटे ठंड सीने पड़े ना कोई हसरत रवे हर दीवाना करे हाथ यशरफ चुम्बन से हंसता Why would you deserve any vision from anything holy after all the horrible, unholy things that you've done? Yeah, the lyrics are basically saying it's pretty, it's very beautiful, the type of music that they have.
yeah, there's nothing really offensive about what the music is saying, but it's just saying that you love they're saying you love a prophet, you love the prophet, if you're a Muslim, I guess, if you love the prophet and you love God and God is a mercy, and that's pretty much what a lot of these nasheeds are. That's so funny. Um, yeah, because there's a lot of stampedes, there's so many people there, and it's super hot, you could get trampled upon. So, and especially think about the Black Stone. You have people going around doing tawaf around the Kaaba, and then they get to the Black Stone, and people will trample other people to get to that Black Stone. तेरे आशिक़ां बेशक गुनाहगार सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ए फलक ए ज़मीन तेरे दम तो हसीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन हुन गुस्ताख रसूल ते बच के जा नहीं सकता अपना मकरू चेहरा पर्दे विच लुका नहीं सकता ना तैयब का बर्तन कोई छुपा नहीं सकता This is exactly what would not happen to a Jewish woman. A scarf is not going to fly from the sky and land on her. सोने नबी मेरे पाक नबी तेरा सदके सोने नबी मेरे पाक नबी तेरा सदके लखवारी जान अपनी मोहम्मद अव्वल आखिर मोहम्मद नासर अतहर मोहम्मद रब दे दिल पर मोहम्मद सब दे रहबर मोहम्मद हक दे पैगंबर 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 मैनू डॉली नहीं दीवानी रसूल को शैतान रुश्ती She's not Dolly anymore. She's Diwani Rasul. Oh my gosh. You got to admit, that was wild, wasn't it? They think this is what will make people become Muslim, and all of a sudden, yeah, she's not wearing hijab anymore. Now she's wearing a headband. She's like in commando or something. Like this is Contra. दोस्त दुश्मन दी पहचान करन वाली आंख अचानक अन्नी क्यों हो गई है? अखा नाम ही होन ते सच्चाई दी रोशनी अपने कार तक ले ही आंदी है गुस्ताखे रसूल। तेरा कार काबा ते नहीं सी नबी दुश्मनी है। काबा सिर्फ खुदा दा कार है ते खुदा दे कार विच महबूबे खुदा दे मनन वाले जानते ने मुनकर नहीं।
अपने कमांडोज नु को हथियार सुट देन नहीं ते सलमान रुश्दी दे शैतान नु आज जमीन भी पनाह नहीं देगी So you know what's really perverted about this movie is if you're a person who like is like a Muslim who's kind of devout and is peaceful, and you see this kind of scene where you have this beautiful kind of nasheed that kind of praises the Prophet of Islam and praises God and does all of this, and it's this very sweet kind of thing. And then you go right into terrorism and violence, and I mean it's pretty horrific. It's a very horrific thing, and I don't know. I think Muslim people should feel very offended. Like if you were a Pakistani, you should feel offended by seeing this, that they're mixing, your faith with this kind of horrific violence, that it's okay to murder and slaughter. And it's like, it's talking about mercy of all the worlds. And then you're seeing the opposite of mercy. You're seeing hate and vitriol and evil. So it's kind of really shocking. And that's it. It's like you're going from like this Muslim who's saying, I love the Prophet, I love Allah. And it's also a Jewish woman to a hijabi woman to then a terrorist. It's so hard to imagine being in 1990 and this movie coming out and actually liking this movie and supporting it, because it's such a horrific, like if you're a Muslim, this is such a horrific message. This is exactly like, dude, if you're like an anti-Muslim apologist, like let's say you're like a, if you take kind of like a Logic or David Wood or Apostle, if Apostle Prophet just shows this movie, it's like this literally proves the arguments that he's making. He's like, if these people are violent, their faith leads to doing horrific, evil things. This movie is extremely problematic, and I think Muslim people should be like, dude, this is probably, and they just say, oh, well, it's a dumb movie. And I'm like, a lot of money went into this movie. Yes, we have a rip from a bad VHS tape, but we can tell a lot of money went into this movie. The set design, the costumes, the amount of actors they have, a lot of money went into this movie. So it's something else. And now this is our last scene. Just like these crappy versions. Like a dupatta or a hijab flies from the sky and it lands on your head, and magically you're going to believe in Islam, and you're a Jewish woman. Yeah, I don't think a Jewish woman is just going to jump up and say, you know what? I'm going to hate Israel. I'm just going to hate all of these things, and I'm just going to jump up and down for this. It makes no sense, and it just showcases the kind of ignorance of the people making this movie. They think that just anybody is just going to want to become Muslim, and they just think it's amazing and perfect for everyone. And they don't, and it's completely ironic. They don't really get that the message they're showing is why people don't want to be Muslim. Everything in this movie is exactly the propaganda of why someone would not want to be a Muslim. This is perfect anti-Muslim propaganda made by Muslim people trying to make it look like Muslim propaganda. That's the irony of this entire film. Exactly. There's a whole lot of money that went into this, but like the script stinks. The editing is just all over the place. It's a hot mess and a disaster. Even if we got like an HD version of this thing would be, flaming horribleness. But a lot of money went to it. They have all the pyrotechnics.
ना इस्लाम का माया न नाक का माई, न जोश न जज्बा न जहाज, कुछ भी कम नहीं आया ते जिदे नहीं तुसी अपना बर्बाद कीता। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। That makes absolutely no sense. They're trying to use video game logic, like these people can jump on top of a balcony, and then when they shoot, all they do is shoot the gun out of their hands. It's ridiculous. मजहबां दी जंग विच डोली दा ईमान बदलिया है। तेरा निशाना अपने कमांडोस क्यों बन रहे ने? फैसले के डोली मेरी बहन ही नहीं, राह गवा दिए कि मैं भी डोली दे नाल ही मुसलमान हो गया मां। All these guns. तू भी अपनी मौत लई तैयार हो जा। Let's hear what this is. क्यों बन रहे ने? तेरा निशाना अपने कमांडोस क्यों बन रहे ने? फैसले के डोली मेरी बहन ही नहीं, राह गवा दिए कि मैं भी डोली दे नाल ही मुसलमान हो गया मां। ते हुन तू भी अपनी मौत लई तैयार हो जा कुत्ते। मेरे होंदिया सलमान दी मौत। It's kind of weird how they think religious conversion works, that magically all of a sudden all your thoughts and everything changes. Like, it's a very bizarre way that people think, how these people even think about theology and religion. It's bizarre. Allah, Allah. It's so funny that this person's supposed to be Jewish. I've never heard one Jewish thing from this person. No Shema Yisrael, no Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, none of that. There's not one Jewish prayer. But immediately when he transforms to Islam, somehow he knows Islamic things. Pretty wild. Maybe it's just, or it could be just that the director has no idea what a Jewish prayer is. So, you know. जब तक बारूद खाना सलामत है ए जंग नहीं मुक सकती अदे विच ना असलात फौज मौजूद है महीने तक भी लड़ती रहे फिर भी न मुके सलमान तो पहले नुतबा करना बहुत जरूरी Exactly, it is.
जिसमें कोई शक नहीं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं देख ले मरदूद ए होइए कुरान पाक मान ले ये ज़ालिकल किताब ला रैब फीह ये शक्की हुई हो किताब जिते शक की कोई गुंजाइश नहीं मल्ला शैतान के कलाम पाक का मुहाफिज खुद खुदा है आज तेरी मौत हर मुनकरे रसूल ले इबरत बन जाएगी It is. I've seen it all been waiting for. I know. Wow. That was a movie. That was a movie. That was a movie. We made it through the entire movie today. It's so funny that we did 5 parts, but we really we went through the whole movie today. Pretty horrific, pretty shocking, but we did it. That was it. That was it. Horrific, amazing, spectacular, many different feelings, but we made it through the entire film. Are there any final thoughts? Oh, the Muslim song was actually nice. I know. That's the best song in the movie. It's funny, the ones where they imitated Bollywood were not actually that great, but Muslim was good. That was probably actually a real song, a real nasheed that they just stole, like they stole the stock footage from Mecca. So yeah, I think yeah, it's kind of like seeing a car crash. You know, you're just shocked, mortified, and very memorable, but you just don't want to see it again. That's what this movie is. It's a car crash. But I was like, it's important to share this with you. You need to see this car crash at least once. You need to know about it. International Gorilay. It's got to be seen. It's got to be known. I think Sheikh Uthman and all the Dawa guys, you just need to bring up this movie to the Dawa guys. What do you think about this piece of Dawa? You bring it to the Dawa tables. You bring this DVD as a form of Dawa. I think you're going to convert a lot of people. You know, this is a perfect Dawa DVD. This is a Dawa DVD. My Lord. Oh, it's so bad. It's so bad. But
I'm just glad that we could do it together, and thank you so much. And if you have any thoughts, this is our final Panj 5th session. They get an HD version of it, not this one, but yeah. Yeah, it was really fun to stream this with all of you, and I think this might be our stream for today because this is our longest stream ever. We watched the entire movie. We did zoom through a few parts, but I'm exhausted, and I think this is it for today. We'll look into tomorrow. We'll do something else tomorrow. I know. It was fun. It was wild. It was weird. It was the most legendary kind of dawa you could ever see in your life. I don't even know if this movie had deception. I think it just was very honest with its take that the heroes that they believe are heroes are actually monsters. So it was a journey. Yeah, we might watch more Pakistani films. They're pretty crazy. There's one about Malajat. We might watch that at some point. Pakistani films, we might even learn Urdu by the end because there's so much madness in them. But DK, okay. Thank you for going on the journey, and we will see each other in the next one.